Hey guys, this is Shankar welcoming you on my YouTube channel Study with the Master. Here I am going to teach you a short story about health is wealth. This is a short story especially made for those students who are very poor in English speaking, and through this process, by telling story, they can learn how to speak English language, how to be comfortable in English. So this video is especially made for those candidates those who want to speak English language and know the grammar, know the words, know the sentence structure. These all things are very important in this section. So there, come with me and let us study the story. And the story is starting from here. I will teach you story bilingually. मैं दुभाषी तरीके से कहानी सिखाऊंगा एंड यू कैन इजिली अंडरस्टैंड द स्टोरी और आप सरलता से कहानी को समझ सकते हैं. द स्टोरी इज स्टार्टिंग फ्रॉम हियर. कहानी यहाँ शुरू हो रही है. अबाउट हेल्थ इज वेल्थ. हेल्थ मतलब स्वास्थ्य ही धन है. हेल्थ इज वेल्थ. स्वास्थ्य ही धन है. द स्टोरी इज स्टार्टिंग फ्रॉम हियर. वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है, देयर लिव्स अ जनरस, एक उदार एंड काइंड हार्टेड किंग और दयालु हृदय वाला राजा रहता था. बट लेकिन द पीपल वर नॉट हैप्पी. लेकिन लोग प्रसन्न नहीं थे विथ देयर किंग, अपने राजा से. बिकॉज क्योंकि द किंग वॉज वेरी लेजी. राजा बहुत आलसी एंड वुड नॉट डू एनीथिंग, और कुछ नहीं करता था अदर देन, इसके सिवाय. किसके? ईटिंग एंड स्लीपिंग. खाने और सोने के सिवाय कुछ नहीं करता था. ही स्पेंड डेज एंड वीक्स. वह दिन और सप्ताह व्यतीत करता था एंड मंथ और महीने इन हिज बेड, अपने बिस्तर पर, इधर ईटिंग या तो खाते हुए, समथिंग कुछ, आर स्लीपिंग या सोते हुए. द किंग बिकेम अ पोटैटो काउच. किंग एक आलू का सोफा बन गया था. एंड द पीपल स्टार्टेड टू वरी अबाउट द किंग, और लोग चिंतित होने लगे अबाउट द किंग, राजा के बारे में. वन डे, एक दिन, द किंग रियलाइज, राजा ने महसूस किया, दैट कि ही कुड नॉट इवन मूव हिज बॉडी, वह अपने शरीर को भी नहीं हिला सकता है, हिला डुला सकता है. नॉट इवन हिज फुट, न ही अपने पैरों को. हिज ही बिकेम वेरी फैट, वो बहुत मोटा. एंड हिज एनिमीज मेड हिम फन ऑफ हिम, और उसके जो शत्रु थे उसका मजाक बनाया करते थे. कॉलिंग हिम, उसको पुकार करके, क्या? फैटी किंग, मोटा राजा. और बल्किंग किंग, भीमकाय या महाकाय राजा. सो व्हाट वर द इम्पैक्ट ऑफ दैट? द किंग इनवाइटेड एक्सपर्ट. द इम्पैक्ट ऑफ दोज वर्ड्स ऑफ हिज एनिमीज did a great work to him. And what he did? The king invited expert doctors. राजा ने आमंत्रित किया एक्सपर्ट्स. एक्सपर्ट मतलब विशेषज्ञ डॉक्टर्स को. फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ हिज कंट्री, अपने देश के विभिन्न भागों से. एंड ऑफर देम जनरस रिवार्ड, और उनको उदार या जो हो सकता था रिवार्ड, पुरस्कार दिए. टू मेक हिम फिट, अब उसको देंगे देंगे पुरस्कार देंगे. ऑफर देम, और उनको आमंत्रित किया या ऑफर किया कि जनरस रिवार्ड मिलेगा. टू मेक फिट हिम फिट, उसको सही करने के लिए. अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, नन कुड हेल्प द किंग, कोई राजा की मदद नहीं कर सका. गेन हिज वेल्थ एंड फिटनेस, जिससे कि वो अपने स्वास्थ्य को प्राप्त करे और अपने फिटनेस को प्राप्त करे, लेकिन कोई मदद नहीं कर सका. द किंग स्पेंट इनॉर्मस अमाउंट ऑफ मनी, राजा ने बहुत सारा पैसा खर्च किया. ऑफ मनी ऑफ, बट एवरीथिंग वर इन वेन, लेकिन ये सभी चीजें व्यर्थ थी. वन फाइन मॉर्निंग, एक अच्छी सुबह, a holy man visited the king, a country, sorry, a holy man visited the country. एक पवित्र आदमी visited, यात्रा किया, the country, उस देश की.
उस राजा के देश की। ही हर्ड अबाउट इल हेल्थ ऑफ द किंग, वह राजा के खराब स्वास्थ्य के बारे में सुना। एंड इन्फॉर्म्ड, और सूचित किया, द मिनिस्टर, मिनिस्टर मंत्री को, एट द पैलेस, पैलेस महल पर, दैट की ही कुड इजिली क्यूर द किंग, वह सरलता से राजा को का इलाज कर सकता है। हियरिंग दीज, इन सब को सुन करके, प्रोमिसेस, इन सब वादों को सुन करके, प्रोमिसिंग वर्ड, वादे करने वाले शब्दों को सुन करके, द मिनिस्टर, मंत्री, बिकेम वेरी हैप्पी, बहुत खुश हुआ। ही रिक्वेस्टेड द किंग, वह राजा से प्रार्थना किया, टू मीट द होली मैन, कि वह पवित्र आदमी से मिले, टू गेट राइड ऑफ हिज प्रॉब्लम, जिससे कि वे अपनी समस्या से छुटकारा प्राप्त करें। So in this way we have studied some part of the story. I am going back once again and to write off his problem. This is the remaining story. This is the remaining story. I am going to start the story. The story is starting once again. The holy man resided at a distant place. पवित्र आदमी रहा करता था at a distant place, एक कुछ दूरी के स्थान पर, कुछ दूरी के स्थान पर। सिंस द किंग कुड नॉट मूव, क्योंकि राजा हिल नहीं सकता था, हिज बॉडी, अपने शरीर को हिला नहीं सकता था। ही आस्क्ड द किंग, उस मिनिस्टर, उसने मिनिस्टर से कहा या पूछा, टू ब्रिंग द होली मैन, कि वो पवित्र आदमी को लाए, टू द पैलेस, महल में। बट लेकिन द होली मैन रिफ्यूज, लेकिन पवित्र आदमी ने मना कर दिया। ही सेड, उसने कहा, दैट की द किंग, राजा को, हैड टू गो टू हिम, राजा को उसके पास ही जाना पड़ेगा, इन ऑर्डर टू गेट क्योर, इलाज करने के लिए उसके पास ही जाना पड़ेगा। आफ्टर स्ट्रेनुअस एफर्ट, बहुत ज्यादा प्रयास करने के बाद, द किंग मेट द होली मैन, राजा पवित्र आदमी से मिला, एट द लैटर्स रेजिडेंस, बाद वाले के रेजिडेंस मतलब निवास स्थान पर, अर्थात बाद वाला कौन है? होली मैन, पवित्र आदमी के निवास स्थान पर। द होली मैन कॉम्प्लीमेंटेड, होली मैन ने कॉम्प्लीमेंटेड, कॉम्प्लीमेंटेड मीन्स सराहना किया या सम्मान किया। होली मैन कॉम्प्लीमेंटेड द किंग, राजा का सम्मान किया, सेइंग, यह करते हुए, दैट की ही वॉज अ ग्रेट रूलर, वे एक महान रूलर थे, शासक थे। एंड सेड, और कहा, दैट की ही वुड सून रिगेन हिज हेल्थ, वो जल्द ही अपना स्वास्थ्य प्राप्त कर लेंगे। ही आस्क्ड द किंग, उसने राजा से कहा, टू कम टू ट्रीटमेंट, इलाज के लिए आए, द नेक्स्ट डे, अगले दिन। ही टोल्ड द किंग, वो राजा से कहा, आल्सो, यह बात भी, दैट की द किंग वुड बी ट्रीटेड ओनली इफ ही केम ऑन फुट टू द होली मैन रेजिडेंस, वो अपने पैरों पर आए, टू द होली मैन रेजिडेंस, पवित्र आदमी के निवास स्थान तक अपने पैरों पर आए। द किंग वॉज अनेबल टू वॉक, किंग, राजा चलने में असमर्थ था। इवन अ फ्यू स्टेप्स ऑन द रोड, सड़क पर कुछ ही कदम चलने में असमर्थ था। बट एडेड बाय हिज फेलो फॉलोअर्स, लेकिन अपने अनुयायियों द्वारा सहायता की गई। ही रीच द होली मैन्स प्लेस, होली मैन्स प्लेस, वह पवित्र आदमी की जगह पहुंचा। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, द होली मैन वॉज नॉट अवेलेबल देयर, पवित्र आदमी उपलब्ध नहीं था। एट हिज ड्यूटी रिक्वेस्ट, अपने ड्यूटी, अपने भक्त की रिक्वेस्ट, प्रार्थना पर, द किंग टू कम एंड मीट हिम द नेक्स्ट डे फॉर ट्रीटमेंट, कम, राजा आया, एंड मीट हिम, उससे मिला, द नेक्स्ट डे, अगले दिन, फॉर ट्रीटमेंट, किसके लिए? इलाज के लिए। एंड हिज ड्यूटी रिक्वेस्टेड, और उसके ड्यूटी ने, उसके भक्त ने, किसके भक्त ने? उस होली मैन के भक्त ने, जो वहां पर उपलब्ध था घर पर, उसने प्रार्थना किया कि राजा आए, टू एंड मीट हिम, और उससे मिले, नेक्स्ट डे, अगले दिन, फॉर ट्रीटमेंट,
इलाज के लिए. दिस वॉज रिपीटेड फॉर 2 weeks. यह चलता रहा 2 सप्ताहों तक. एंड द किंग नेवर मेट द होली मैन. और राजा कभी पवित्र आदमी से नहीं मिल सका. एंड नेवर हैड एनी ट्रीटमेंट. और कोई किसी प्रकार का इलाज नहीं हुआ. ग्रेजुअली धीरे धीरे द किंग रियलाइज्ड. राजा को महसूस हुआ दैट कि ही फेल्ट अ लॉट लाइटर. कि वह बहुत ज्यादा हल्का महसूस कर रहा था. लॉस्ट अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ वेट. कुछ मात्रा में अपने वेट भार को भी खोया था. एंड फेल्ट मोर एक्टिव. और बहुत ज्यादा एक्टिव गतिशील महसूस कर रहा था देन बिफोर पहले से. ही रियलाइज्ड. उसने महसूस किया द रीजन व्हाई. कारण व्हाई द होली मैन आस्क्ड हिम टू रीच हिज प्लेस बाय वॉकिंग. कि राजा को होली मैन ने, पवित्र आदमी ने क्यों कहा था टू रीच हिज प्लेस, उसके स्थान पर आए बाय वॉकिंग, चल करके. सो वेरी सुन, बहुत जल्दी द किंग रिगेन हिज हेल्थ. राजा ने अपना स्वास्थ्य प्राप्त कर लिया. एंड द पीपल वर वेरी हैप्पी. और लोग बहुत प्रसन्न थे इन हिज किंगडम, उसके राज दरबार में. सो in this way I have taught you the story. What was the outcome of the story? Outcome of the story is that health is wealth. Health is wealth. If your health is good, then you are wealthy. And it is said always that work while you work, play while you play. That is the way to be happy and gay. And one more thing is that if you lost money, you lost nothing. If you lost health, you lost something. And if you lost your character, you lost everything. So these are saying you that health is important. So keep yourself healthy and wealthy so that you can live a better life in your way. So there I am teaching you the story. The story is starting from here. Story is starting from here. There was a man, there was a king in his kingdom. He was living his life very fruitfully, but he was liked by his subject, and the people of his kingdom were liking him too much because he was living in a good country. So he was liked by everyone. But the problem was that he was very lazy and very problem creative personality he had. So he was passing a very lazy life. He never cared about anything about his kingdom. So all the people, those were of his kingdom, they were thinking wrong that what is going to be done by our king, because he is not good, and how he will protect us. So these all things were going in the mind of the people, and they were unhappy with the king. And gradually the king started to pass his life uh, at the bed, and at the all time he stay in his kingdom and never go out. Just eating and sleeping was his work of the day, and he keep on doing that for several months, several years, and he become very lazy. So he become very fatty and become a man of bulky body. So he was unable to move. One day he feel that he was unable to move his body, and he was unable to move his feet. So he became very surprised at this, and all the people of his kingdom started to feel unhappy because of the condition saying of his king. So seeing that, they were very unhappy with that, and they wanted to make the king very good. So they were caring about the king at that moment. But what they did very good thing. The king, on the request of his subjects, called many doctors of the various parts of his country and presented them many good rewards, and told them that take these generous rewards and do treatment of my body so that I can live a very happy life. But nobody can do anything to him because that was unable to be solved. The problem of what happened to him, that was unable to be solved. So once again the king became in melancholy stage because there was no any treatment to his health. So he was feeling very bad. But
after some days, a holy man reached in that country, and when he heard about the condition of his king, he told that I will take care of that king, but he has to come to me. So the king was unable to reach to the place of that, because he was unable to move from his bed. So because he always passed his life while sleeping on his bed, so these all things were creating a problem to him. And when the minister heard that the man is asking his king to come to his place, but the king told that the man should come to my place for my treatment. But the holy man told that I would not come to your place, you have to come to my place. And the king, with the support of his kingdom and with the support of his all the countrymen, he reached there to the place of that holy man. And holy man told the king that you are a great leader, you are a great ruler of your time, and you will become healthy soon. Sorry, you will become healthy soon. These all words were told by the holy man to king. The king was very sure that he will get treatment, but the holy man told that today I will not give you treatment, please come next day. Then the king returned to his palace, and next day, come next day on your fate. It was told by the holy man. So on next day, the king, walking on his feet, reached to the kingdom with great trouble. But the to the place of the man, but he was not present there. So a duty of that man told him that please come next day on your fate to this place. So in this way, gradually for 2 weeks, that king reached to the place of that holy man and the residence of that holy man, but he never met with the man to get treatment. But he couldn't get treatment from that man, but he feel light, because while walking he got reduced some weight of his body, and he was feeling some healthy. And the king realized that why the holy man told these are things to come to his place by walking, because of this is the way to treat me. So the king since then started to walk and started to do other activities, and gradually he get his health and become very happy, and all the subjects of his kingdom were becoming very happy. So in this way I have told you the story, and the story was very nice. It was although a big story, but you can realize that if you can repeat this story in front of your brothers, sisters and teachers, then you can speak English language like this, and you can become the master of English language. So with these words, I'm going to end my video. Please like, share and subscribe my video. Thank you very much.